Hello, my dear learners of class 11. Welcome to English. How are you all? Great. When I see your smiling faces, it makes me smile too. So, let us start with our lesson, birth. The other day we understood the lesson and had a complete understanding of the lesson. Now, today, we'll start with the kind of questions that are asked in examinations. So, before I start with the lesson, let me again give you a brief summary, a very short summary of the lesson birth. Do you remember? Birth is about a doctor who has recently graduated from a medical school and he has started assisting uh, another doctor who's a senior one, Dr. Edward Page. याद है ना एंड्रयू मैनसन जो कि हाल ही में अपनी एजुकेशन पूरी करके मेडिकल साइंसेज की ग्रेजुएशन करके एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज उनको असिस्ट करने लगा है राइट वन डे he goes to meet his girlfriend Christine, and there he has some quarrel with her. So, in a very sad mood, he returns late at night. And when he reaches his apartment, what does he find? He finds a man whose name is Joe Morgan. He is anxiously waiting for him. And when he asks the reason, he comes to know that his wife is in labor pain and he wants him to come with him and look into the matter. See, he has to help in delivering the baby. ठीक है ना पता चलता है कि जो मॉर्गन उसका वेट कर रहा है और वो बताता है कि उसकी वाइफ लेबर पेन में है एंड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज दे वर गोइंग टू हैव अ बेबी 20 साल की शादी के बाद बेबी होने वाला था तो यू कैन इमेजिन कितने वो वरिड होंगे हस्बैंड वाइफ so Andrew immediately accompanies him and goes to Joe Morgan's house. There, he goes upstairs and he finds that the mother of Susan Morgan is there and a midwife is there. वो दोनों हैं and he sits there. He feels there is some time. Then he has a cup of tea and by 4 o'clock in the morning, the baby is delivered. But when they hold the baby in their hand, they come to know that it is still and lifeless. उसमें जान ही नहीं है बच्चे में और नर्स जो मिडवाइफ होती है वो भी कहती है कि सर द बेबी इज लाइफलेस नाउ द मदर इज ऑल्सो कोलेस्पिंग शी इज नॉट वेल तो डॉक्टर हैज टू डिसाइड एंड्रू हैज टू डिसाइड कि मैं माँ को पहले देखूं या बच्चे को पहले देखूं सो ही इमीडिएटली टेक्स अ डिसीजन कि वो माँ को पहले देखने लगता है उसको इंजेक्शन देता है उसका हार्ट उस मेडिसिन से स्ट्रांग होने लगता है ब्रीदिंग पल्स रेट नॉर्मल होने लगती है तो वो बेबी को पूछता है बेबी जो है वो मिडवाइफ ने ये सोचकर कि बेबी इज लाइफलेस उसमें जान तो है नहीं बेड के नीचे न्यूज़पेपर्स के बीच में रख देती है ऐसे ही डाल देती है तो एंड्रयू इमीडिएटली पुल्स द बेबी एंड लुक्स एट हिम उसको समझ आता है कि बच्चे में कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है फिर वो टेल्स द मिडवाइफ कि ब्रिंग वाटर इनटू pans, hot and icy cold water. And he starts juggling. बेबी को एक बार हॉट वाटर में डिप करता है एक बार कोल्ड वाटर में फिर एक बार हॉट वाटर में फिर एक बार कोल्ड वाटर में एंड
After a long struggle, then he presses the chest of the baby, और किसी तरह से बेबी में थोड़ा सा ब्रीदिंग स्टार्ट होता है और नॉस्ट्रल में से म्यूकस निकल कर आता है, जो ब्लॉकेज था ना वो खत्म होता है, और जो बेबी वाइट हुआ था वो पिंक होना शुरू हो जाता है, एंड दिस वे ही सेव्स द बेबी। है ना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ना उसकी, और इसका उसके फ्यूचर पर भी बहुत इफेक्ट होने वाला था, क्योंकि ये बात जैसे कहते हैं ना जंगल की आग की तरह स्प्रेड हो गई छोटे से टाउन में, एंड दिस वे ही like he has given birth to the baby because the baby was born lifeless, है ना, दोबारा से उसको जन्म देना एक अपने आप में अचीवमेंट थी। So again I have talked to you about the lesson. So now let's move to the MCQs, short questions and long questions. So all set? Okay, let me share screen with you all. Just a second and everything will be right in front of you. Here it is. Yes. Now let's go through the multiple choice questions first. And I always start with one of my favorite questions. Name the author of the lesson Birth. Who's the author? Let's see the options. J Priestley, J Cronin, P Cronin, none of the above. So who do you think is the author? Yes, option B, that is J Cronin, is the correct answer. So let's move on to the next one. Whom did Andrew Manson assist? Who was the senior doctor he was assisting? Dr. Edward Page, Dr. Stuart Page, Dr. K K Aggarwal, all of the above. So which option? Yes, I just now mentioned the doctor's name, so it will be very easy for you all to make out the correct answer. Yes, and the correct answer is Dr. Edward Page. Let's see the question number 3. Name the girlfriend of Andrew Manson. And I just now mentioned the name. Is she Suzanne or Mary or Christine or Juhi? Yes, I know you all know the answer. And the answer is option C, Christine. Let's move on to question number 4. Who is waiting for Andrew Manson that night? Who was waiting? Was he John Morgan? Was he Jordan Morgan? Was he Gaby Morgan? Or was he Joe Morgan? So, who was waiting? Yes, the correct answer is Joe Morgan. Option D. Right. Very nice. Let's move on. How has the author described Mrs. Morgan's mother? कैसे बताया, कैसी थी मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन की मदर? शी वॉज वाइज, शी वॉज ग्रे हेयर्ड, शी वॉज इन हर 70s, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, कोई कौन सी एक ऑप्शन हो? ऑथर बताता है कि वो 70s में थी, राइट, 70s में थी तो ग्रे हेयर्ड भी थी, एंड शी वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड वाइज, ये भी वो बताता है लेसन में। सो कौन सी ऑप्शन आएगी यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। After how many years were Joe and Susan blessed with a child? After how many years they were being blessed with a child? 10 years, 1 year, 5 years, 20 years. ये सारी चीजें मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस की। So, how many years? Yes, 20 years. That was the concern, that they were having a baby after 20 years, and they both were so worried and stressed. They didn't want to take any kind of risk, isn't it?
Okay, let's see the next question. When Andrew approached, Susan was accompanied by her mother, and when Andrew reached the room, तो सुजन के साथ और कौन कौन था? उनकी मदर और जो or father or a midwife or a mother-in-law. Who else was there? Yes, option C, a midwife. She had come there to assist her in delivering the baby. Now let's move on to question number 8. How was the newborn child? कैसा था बेबी? Imagine करो. Healthy, lifeless, underweight, anemic. कैसा था बेबी? लाइफलेस. ये वर्ड बार बार यूज होता है. लाइफलेस. गुड. In the dilemma he faced, what did Andrew do? Dilemma word. I explained it yesterday also. What is dilemma? Dilemma is when you have two things and you have to opt one out of them, whether this first or this first. Right? So now he had, on the one side, he had a collapsing mother, on the other side, he had a lifeless babe. So, to whom should he attend first? So, here Andrew attended to whom? Check upon Susan first, check upon the child first, run away, left it to handle to the midwife. क्या किया उसने जब वो इस डायलेमा में था? तो इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ किस तरफ बढ़ा? मदर की तरफ, मदर को क्योर करने के लिए. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर है? चेक अपॉन Susan फर्स्ट. उसने किसको पहले चेक किया? Susan. What all things did Andrew use in the treatment? क्या यूज किया उसने ट्रीटमेंट के लिए? What did he juggle between? Hot and cold water, basins and towels, a blanket, all of them. Look, he used hot and cold water, right? He used the basins and towels. वो दो बेसिन्स लिए, एक में हॉट वाटर था, एक में कोल्ड वाटर था. देन टॉवल्स भी लिए. देन ही यूज्ड अ ब्लैंकेट ऑल्सो, जिस पे बच्चे को लिटा के ऐसे उसको रगड़ा. So last option is all of the above. So which one do you think is the correct option? Yes, I don't have anything to tell now. Option D is the correct option. Great. Let's see the next MCQ. What does the author refer to as a miracle? Miracle मतलब चमत्कार. किस चीज को उन्होंने चमत्कार कहा ऑथर ने? Let's see the options. Life getting into the stillborn, एक stillborn baby में life आ जाना. Morgan family welcoming a child, Morgan family बच्चे का स्वागत करती है. Susan getting consciousness, वो होश में आ जाती है Susan. None of the above, इनमें से कोई भी नहीं. Which option do you think? Miracle क्या था? स्टिल बॉर्न में लाइफ आ जाना, एक लाइफलेस बेबी में लाइफ आ जाना. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर है. Good. Now let's move on to few important short questions. Who was Joe Morgan? Why had he been waiting for Dr. Andrew Manson? Joe Morgan कौन था? Joe Morgan was a driller in Blenheim, a mining town. मैंने while describing the lesson, I told you Blenheim was a mining town. So he did drilling work. He was a big, strong, and heavy middle-aged person. मिडिल एजेड तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं होगा ही, क्योंकि 20 years तो मैरिज को ही हो गए थे. तो हाइट अच्छी, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा मोटा, मिडिल एजेड पर्सन था. Joe and his wife Susan, who had been
married nearly 20 years, were expecting their first child. पहला बेबी उनको आफ्टर मैरिज, आफ्टर 20 years of मैरिज होने वाला था. So Joe was waiting for the doctor to help Susan in the delivery of the child. इसलिए वहां पर वेट कर रहा था कि डॉक्टर को मैं साथ लेकर जाऊं और वो डिलीवरी करने में हेल्प करे. Let's see question number 2. Andrew now felt dull and listless. उस दिन बहुत डल फील कर रहा था, टायर्ड फील कर रहा था, बोरिंग फील कर रहा था. उसके क्या रीजंस थे? On Joe Morgan's call, Andrew, along with Joe, set out for Joe's house. तो उस दिन जब वो घर पहुंचा, जो मॉर्गन वेट कर रहा था और वो उसके साथ ही उसके घर चल पड़ा. The night air was cool and deep with quiet mystery, but Andrew felt dull and listless because it was past midnight and he was reflecting about his own relationship with Christine, the girl he loved. अब देखिए आधी रात का टाइम था, तो आप कितना रहस्यमयी सा हो जाता है, सब तरफ अंधेरा और उस वक्त तक लोग भी नहीं होते लेन्स पर, स्ट्रीट्स पर. तो लेकिन एंड्रयू इसलिए डल और लिस्टलेस फील नहीं कर रहा था. वो इसलिए मतलब डल फील कर रहा था बिकॉज क्रिस्टीन से उसका कोई झगड़ा हुआ था. तो वो अपने और क्रिस्टीन स्ट्रेस्ड आउट था. जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उससे मिलने गए और उससे झगड़ा होकर आ गए, तो यू विल फील बैड, यू विल फील सैड. ठीक है ना? तो इस कारण से वो डल और लिस्टलेस फील कर रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द ओल्ड वुमेन्स फियर? एंड्रयू रीएश्योर हर. वो जो बूढ़ी औरत कौन थी? स्यूजन मॉर्गन की मदर. तो शी वॉज इक्वली वरिड क्योंकि उसकी बेटी को आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज बेबी होने वाला है एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई है एंड शी इज सो वरिड. तो उनका फियर क्या था और एंड्रयू ने कैसे उनको रीअश्योर किया, तसल्ली दी. When the old woman returned with a cup of tea, Andrew smiled faintly. अब थका हुआ तो था ही ना, तो जब वो उसके लिए एक कप चाय लेकर आई तो वो उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया. He noticed the old woman was wise and experienced. उसने ये नोटिस किया. Naturally इतनी 70s में that lady was and वो एक्सपीरियंस तो होगी, लाइफ के अनुभव तो होंगे ना. तो उसने नोटिस किया कि औरत समझदार है, बुद्धिमान है, अनुभवी है. शी रियलाइज दैट देयर वाज सम पीरियड ऑफ वेटिंग, कुछ टाइम अभी लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, अभी एकदम से डिलीवरी नहीं होगी. शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर. वो डर रही थी कि डॉक्टर कहीं ये कहकर ना चला जाए कि मैं अभी अभी वक्त लगेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी ना. They were all so stressed out. But he assured her that he would run away. He would not run away. उसने कहा माता जी डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती. तो उसको बहुत एक रिलीफ मिला मदर को. Now question number 4 is, what dilemma was Andrew caught in? How did he resolve it? डायलेमा वर्ड को बार बार हमने डिस्कस किया. क्या डायलेमा था कि मदर को देखे या बच्चे को देखे. आफ्टर एन आवर लॉन्ग स्ट्रगल द चाइल्ड वॉज born lifeless and the mother was in a critical state. 1 घंटे के पूरे संघर्ष के बाद बेबी हुआ तो बेबी लाइफलेस हुआ और उधर मदर की क्रिटिकल कंडीशन थी. Andrew was torn between his desire to attempt to save the child and his obligation towards the mother. अब उसको एक बार को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को पहले संभालूं या बेटे को पहले संभालूं. तो उसने क्या किया? ही ओवरकेम द डायलेमा. उस द्वंद्व से, उस कश्मकश से एकदम से बाहर निकला
or instinctively he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan. उसने एकदम से बच्चा नर्स को दिया और सुजन मॉर्गन जो कि माँ थी उसको पहले अटेंड किया. हाउ डिड ही रिवाइव द मदर? माँ को कैसे ठीक किया? टू रिवाइव सुजन मॉर्गन हु ले कोलैप्स and almost pulseless, Andrew smashed a glass ampule instantly and injected the medicine. जो माँ जो कि कोलैप्स हो चुकी थी उसको उसने पल्स भी नहीं थी उसकी. क्या किया उन्होंने? एक ग्लास एम्प्यूल इंजेक्शन को तोड़ा और फटाफट इंजेक्शन फिल किया और मेडिसिन उनको इंजेक्ट कर. Then he flung down the hypodermic syringe and worked ceaselessly to revive the almost lifeless wound. और फिर उसको लाइक इंजेक्शन में सिरिंज में मेडिसिन फिल की और उस वुमेन को जो कि मदर सुजन मॉर्गन को इंजेक्ट किया. आफ्टर फ्यू मिनट्स of intense effort, her head heart strengthened and she was safe. कुछ मिनटों की इंटेंस मेहनत के बाद उस सुजन मॉर्गन का हार्ट स्ट्रांग हुआ और समझ आ गया डॉक्टर को कि शी इज सेफ. What did Andrew think was wrong with the child? What did he do? Very important question. Andrew saw the child was a perfectly formed boy. उसने देखा बेबी पूरा है, perfect है. All organs and body parts are formed. The head lolled on a thin neck and the limbs seemed boneless. सिर एक तरफ को लुढ़का पड़ा है और हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं है, ऐसे लटके हुए हैं. He knew that the whiteness meant एस्फिक्सिया पेलिटा. ये एक डिजीज होती है जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी में. तो वो समझ गया कि ये जो वाइटनेस है ये सफोकेशन की वजह से है. ही थॉट ऑफ द ट्रीटमेंट. उसने सोचा क्या ट्रीटमेंट दूं. And he remembered being used at the Samaritan. He applied the same to the stillborn baby. तो उसको एक ट्रीटमेंट ध्यान आया जो कि जब वो पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट को दी गई थी और वही ट्रीटमेंट उसने उस स्टिल बॉर्न चाइल्ड के लिए यूज की. अब वो ट्रीटमेंट क्या थी? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the treatment given to the child? क्या ट्रीटमेंट दिया बच्चे को? Andrew hurried the child from one basin filled with cold water to the one with warm water. मतलब जगल जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे उछाल कर एक बार एक बेसिन में डाला जिसमें कोल्ड वाटर है, फिर वहां से निकाला दूसरे बेसिन में डाला जिसमें हॉट वाटर है, और इसी तरह से टर्न बाय टर्न वो करता गया. He continued his efforts for half an hour to no avail. Imagine half an hour. It's not easy to keep doing this, and there was no result. कोई फायदा नहीं हुआ वो हाफ एन आवर मेहनत करने के बाद भी. Lastly, he rubbed the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands till the child finally gave a cry. आखिर में उसने एक रफ टॉवल लिया और जोर जोर से उसकी चेस्ट को रगड़ना शुरू किया और ऐसे ऐसे दबाना शुरू किया. फाइनली बच्चे के हार्ट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने लगा एंड एक नॉस्ट्रल में से म्यूकस निकला एंड द चाइल्ड गेव अ क्राई. फाइनली लाइफ केम टू दैट बेबी. Isn't it? So अगर ये एफर्ट नहीं करता तो what midwife had done? मिडवाइफ ने तो वो नीचे रख दिया था उसको मरा हुआ समझकर. ये इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, इसकी मेहनत थी, इसकी वो जो स्पिरिट थी ऑफ नॉट लूजिंग होप, इसने उस बेबी को दोबारा से बर्थ दिया. राइट तभी तो इस लेसन का टाइटल बर्थ है एंड इट्स वेरी अप्रोप्रिएट. Now let's see the long question. I have done something, oh God.
I have done something real at last. Why did Andrew say this? What does it mean? आखिर में जब वो बच्चा जिंदा हो गया, बच्चा रो पड़ा और बच्चे को वो हैंड ओवर करके वहां से चल पड़ा, तो सोचने लगा, गॉड, मैंने तो सच में कुछ किया है आज। समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने वाकई में कुछ किया। एंड्रयू अपने आप से कहता है। तो इस बात का मतलब क्या था? लेट्स सी। The young doctor Andrew Manson had done a commendable work. बहुत ही तारीफ के लायक काम किया था। His exclamation is justified. उसकी ये बात की God, I've done something, justified है, वाकई ठीक है। He had not only helped the middle-aged lady in the safe delivery of a male child, but also restored them to perfect health. उसने केवल एक मिडिल एजेड, उम्र ज्यादा थी, उसको सेफ डिलीवरी में हेल्प किया, बल्कि उनका बच्चा परफेक्ट हेल्थ में उनको हैंड ओवर किया। Susan Morgan's strength was ebbing after the delivery. उसकी तो ताकत खत्म होने लगी थी डिलीवरी के बाद, वो तो कोलैप्स हो गई थी। शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस, अगर उसको अटेंड नहीं किया जाता तो शायद वो भी मर जाती, पल्स ही नहीं थी। Andrew gave her an injection and worked severely to strengthen her heart. उसने उसको इंजेक्शन दिया और जिससे कि उसके हार्ट में जान आई, हार्ट बीट ठीक से चलने लगी। द मेजर अचीवमेंट, उससे भी बड़ी अचीवमेंट क्या थी? The major achievement of Andrew was to resuscitate the stillborn child. उससे भी बड़ी अचीवमेंट क्या थी? कि उस स्टिल बॉर्न बच्चे में, लाइफलेस बच्चे में दोबारा से जान फूंक देना। First, he laid the child on a blanket and began the special method of respiration. पहले उसने ब्लैंकेट पर लिटा दिया बच्चे को और वो जो रेस्पिरेशन देने का मेथड होता है वो ट्राई किया। Then he tried the hot and cold water treatment, dipping the baby alternately. फिर उसने hot and cold water की ट्रीटमेंट दी, एक बार इसमें बेबी को alternately डिप करता चला गया। He labored in vain for half an hour. आधा घंटा मेहनत की लेकिन बेकार। He then made another last effort. फिर एक और, देखो हिम्मत नहीं छोड़ी, एक लास्ट एफर्ट और किया। ही रब द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ने लगा उसकी चेस्ट को। He went on pressing and releasing the baby's little chest with both his hands. अपने दोनों हाथों से प्रेस करता छोड़ता, प्रेस करता छोड़ता उसकी चेस्ट को। At last the baby responded. और आखिर में बेबी ने उसकी सारी मेहनत का जवाब दिया। His chest heaved. तो आखिर में ऐसे ऐसे सा कुछ, मतलब हल्का सा एफर्ट बेबी का दिखाई दिया। एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, तो एंड्रयू ने और जोर जोर से मेहनत करना शुरू किया। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ। जैसे कई बार हम कुछ खाते हैं और हमारी ब्रीदिंग पाइप में चला जाता है तो हम कैसे गैस्प करते ऐसे गैस्प करते हैं ना सांस लेने के लिए, तो बच्चा वैसे अब गैस्प कर रहा था। A bubble of mucus came from his tiny nostril. और उसकी छोटी सी नॉस्ट्रिल में से एक बबल म्यूकस निकल कर आया और मतलब क्लियर हो गया वो ब्लॉकेज। द पेल स्किन टर्न पिंक, जो सफेद बड़ा बॉडी थी वो पिंक होने लगी। His limbs became hard. वो जो बोनलेस ऐसे हाथ पैर लटक रहे थे ना, वो सख्त होने लगे, वो जान पकड़ने लगे। Then came the child's cry. और तब वो एकदम रोया बच्चा। Andrew called upon God as witness of his act, which was no less than a miracle. उसने कहा, भगवान थैंक यू, यू वॉच्ड एज अ विटनेस मेरी मेहनत, और ये चमत्कार किया आपने, मुझे हेल्प किया इस चमत्कार को करने में। It was not mere theoretical talk, but a practical achievement, something real and solid. अब ये चीज़ें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। It was not bookish knowledge. ये एक प्रैक्टिकल अचीवमेंट थी उसकी, जो उसने अपनी
वो कहते हैं ना, एफर्ट करता रहा, होप नहीं छोड़ी, और समथिंग what he achieved was real and solid and was commendable. बहुत 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 तारीफ के लायक था जो भी उसने अचीव किया. So these questions I think are really important from the point of view of your examination, and they cover almost the whole story also. So, what I want you all is to please copy them down in your notebooks or registers, because when you'll be revising for your examination, these will be really, really helpful to all of you. So, now what you all have to do is like the video, and please, please, those who have still not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. I'll be posting really useful videos every now and then, and will be giving you notifications when you subscribe to my channel. So, this is all for today. We'll be meeting soon. Goodbye, my learners of class 11. Take care and stay safe.